today we'll start with this part of the chapter, which is called as thermal expansion. Right. So it's pretty basic concept. It's not a very tough part. ठीक है, entire heat वाला जो part है वो बहुत ही easy part है. ठीक है. बस application है thermal expansion में compared to calorimetry ज़्यादा application है. Calorimetry very straightforward questions. ठीक है, temperature calculation, mixture calculation. These are the only two type of questions that we get in calorimetry. Okay. Final temperature क्या होगा और mixture में क्या क्या होगा? Means ice होगा, water होगा, vapor होगा, क्या क्या होगा? Right. Now let's talk about thermal expansion. So basically, जब भी आप किसी भी चीज को heat करते हैं, whenever you heat anything, that means when you are supplying heat energy. When I say you heat anything, that means you are supplying energy. Heat is the energy in transit. Right. So when you supply heat to a body, the temperature increases. And when the temperature increases, the distance between any two particles increases. ठीक है, उसके अंदर के कोई भी दो पार्टिकल जो होंगे उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा पूरा चीज. एंड दिस लीड्स टू ओवरऑल एक्सपेंशन इन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में ओवरऑल एक्सपेंशन हो जाएगा. राइट. ठीक है, दिस इज द प्रीटी बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल एजिटेट होगा, पार्टिकल का जो कोलिजन होगा, मतलब पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. इट विल वाइब्रेट विथ इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड. सो दैट इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड से जो वो वाइब्रेट कर रहा है, दैट अमाउंट्स टू इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, जिसके कारण ओवरऑल एक्सपेंशन इन द ऑब्जेक्ट हो जाता है. तो ये एक्सपेंशन जो होता है ये तीन तरीके का होता है. This expansion can be in length, that is called as linear expansion. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल है तो उसका एरिया भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों साइड का लेंथ और विड्थ दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे लीनियर एक्सपेंशन के कारण. तो हमारे पास होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल, that is area. And then we have the third type, that is volumetric. That is in the volume. Got it? Yes, sir. Now suppose मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ. कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, या लेट्स से एक डिस्क लेता हूँ. डिस्क का रेडियस r है और डिस्क पे मैं कोई दो पॉइंट लेता हूँ A एंड B. इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस L है. Okay. And then I supply heat energy to this disk. So what will happen to L and R? Will both increase, or one will increase and the other will decrease? Both will increase. So see what I said, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. So L dash is greater than L and R dash is greater than R. So you have to keep in mind कि टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल. कोई एक ऑब्जेक्ट आप लेंगे, उसमें कोई भी दो पार्टिकल आप ले लेंगे, पहले जो उनके बीच की डिस्टेंस था उससे अब डिस्टेंस ज्यादा होगा. कोई भी रैंडम आप सेलेक्ट कीजिए दो पार्टिकल, उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना है, whatever be the shape. Right. Got it? Now see the formula for linear expansion. All these are experimental result. The formula for linear expansion is L dash is L1 plus alpha delta T, where alpha is called as coefficient of thermal linear thermal expansion. या linear expansion भी directly कह सकते हैं. Fine. And delta T is final temperature minus initial temperature. If final temperature is greater than initial temperature, the L dash will be greater than L, and if final temperature is less than initial temperature,
then L dash is less than L. This is expansion and this is contraction. Right. ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला से दोनों चीज दिया जाएगा. Fine, you will automatically get the answer, but just you have to take delta t properly. So this alpha depends on nature of material of body, and this is experimentally calculated alpha. Now my question, see, we will have lots of theory today, by the way. Suppose, Gurashish, I take an object like this. This is a disc with a hollow in between. Fine. And I mark three things: R1 inner radius, R2 outer radius, A, B, C, center is O. Now you have to tell me which all will increase: R1, R2, OA, OB, OC, AB, AC. आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन इंक्रीज होगा, कौन कौन डिक्रीज होगा. मैं आपको एक और सिचुएशन दे देता हूँ to make things easier for you. Let's say I mark one more point D. ठीक है? AD भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको. अब बताइए, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, ऑलवेज. बट O और O तो नहीं है ना उस पे? वो नहीं है, लेकिन AD तो डायमीटर है ना. हाँ, राइट. हाँ, राइट. गॉट इट, गुरशीष? तो लीनियर एक्सपेंशन के बाद आता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है? एरिया. सो A डैश इज इक्वल टू A1 प्लस बीटा डेल्टा टी. बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन. राइट. Fine. And similarly we have volumetric expansion. हम सारा एप्लीकेशन एक साथ करेंगे. Volumetric expansion. Volumetric expansion V dash is V1 plus gamma delta T. Gamma is coefficient of volumetric expansion.